सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम यूसीसी के ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं। और हमारा पसमादा पक्ष ये है कि यूसीसी आने से पसमादा औरतों को इससे लाभ होगा, इससे हमें लाभ होगा, हम मुख्य धारा में आएंगे। जो भारत, इसको लेकर अलग अलग पक्ष पर हम वीडियो बना रहे हैं। आज का जो वीडियो विशेष इसलिए है कि हम उन मुद्दों को जो औरत से जुड़े हुए हैं, जो 5-6 मुद्दे हैं, तलाक, हलाला, प्रॉपर्टी में राइट और एज ऑफ मैरिज, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों का जवाब क्या इस्लाम खुद देता है? क्या मुस्लिम समाज अगर अंदर से सुधार करना चाहता तो क्या ये सुधार हो सकता था? क्या इस्लाम इसकी परमिशन देता है कि वो आज के मानक के अनुसार अपने आप में सुधार कर सके, या उसके अंदर ये सुधार की गुंजाइश बहुत पहले से थी, जिसे कुछ तथाकथित अशराफ लीडरशिप ने दबा रखा था अपने फायदे के लिए, अपनी पैट्रियार्की बनाए रखने के लिए? तो इस विषय पर बात करने के लिए हम बहुत ही सम्मानित राइटर, स्पीकर हमारे साथ आज मौजूद हैं, हसन महमूद साहब। हसन महमूद साहब का पहले भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे आ रखा है। इनकी बहुत मशहूर किताब है हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम। उनका 2 पार्ट में इंटरव्यू इसी चैनल पसमादा डेमोक्रेसी पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वो और ये किताब भी फ्री उपलब्ध है, आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कनाडा में जो शरिया आने वाला था, शरिया बोर्ड बनने वाला था, उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया था और उसको उन्होंने वहां पे रोका था। इस तरीके की बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर ये आप सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ। जी जी हाँ। सर हम शुरू से शुरू करते हैं सर, यूसीसी को लेके आपका, क्योंकि आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इस वक्त कनाडा में हैं, टोरंटो में। तो सर आप इससे इंटरेस्ट, आप इसमें क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? लोग सवाल करेंगे ना कि ये तो भारत के नहीं, ये क्यों इतना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं यहाँ के यूसीसी के ऊपर? तो मैं सर थोड़ा सा ब्रीफ में आप बोलें, फिर उसके बाद हम मुद्दे पे आ जाएंगे, टॉपिक पे आ जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सबको खैर करे। Why I am concerned with UCC in India? Islam is not an Indian religion. Islam is a global religion, and UCC will impact Islam, Muslims. So every Muslim everywhere has a right to comment and discuss UCC anywhere in the world. Number 2, UCC is about human rights. Human rights is not a local issue, it's a global issue. Every good human being should work for human rights, because injustice anywhere is a threat to justice everywhere, as Martin Luther King Jr. said. So I hope you got my answer. And I want to begin with big congratulations to you guys, the activists, for your victory over Tin Talak. Thank you, sir. Thank you. Na jane how many women's life was destroyed by this anti-women Sharia-Conspiracy law. And you know what? This law is sitting here in this book, Hidayah, in page 353. This law is sitting in this book. This is Shafi law book, law number 3.N.3.5. So it's not a folk story. ये कहानी नहीं है, ये law है sitting in the Sharia book. This is anti-women Sharia conspiracy. Without UCC, you cannot claim India as a civilized country. In every civilized country, there is UCC. In Canada, we have UCC, and we are living perfect Islamic life with no problem. See this Tin Talaq. This is against the Quran as well. The Quran never supported instant divorce. Rather, the Quranic process of divorce takes months and gives the husband a chance to think and to take his divorce back, so that sansar sahi salamat rahe. This law destroyed that scope of the husband also. So that's a good job done outlawing तीन तलाक. You know what is the irony? Shame ये है कि हमारा आलिम लोगों को चाहिए था
ये 3 तलाक कानून सेंचुरीज एगो इसको रिजेक्ट करना. They didn't. Now a parliament dominated by non-Muslims did such a beautiful good job to Muslims. Over to you. यस सर. सर अब हम टॉपिक पे ही आते हैं सर. मैं आप ओके सर, एक मिनट, जस्ट मिनट. जी सर, अब हम पहले से बात शुरू करते हैं कि पहले जो तलाक के मुद्दे पे आपका कहना यह है सर कि तलाक का मुद्दा खुद इस्लाम के अंदर ही ब्यूटीफुली तरीके से बताया जा चुका है कि हम एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकते. ठीक है, फिर भी ये प्रैक्टिस हो रही थी सर. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा सा सर उस पे बात करते कि कैसे, कहाँ से आप ये बात कह रहे हैं कि तलाक का ऐसी एक बार में 3 तलाक जो है इस्लामिक नहीं है. Well, I told you that nowhere the Quran supports 3 talaq. Rather, the Quranic process of divorce in Surah Baqarah 229 to 230, even in 232, when Samagrik leke, you will see that this process takes at least 2 months to complete, so that the husband gets a chance to rethink and to take the talaq back. But somehow this law is written in the book. Now, this is very important. What was the mindset of the people, alims, past alims, who wrote this law? This is Ihya Ulumuddin of Imam Ghazali. This is volume 2 of 9 volumes. I am reading one sentence from its page number 295. This is Ihya Ulumuddin of Imam Ghazali. That shows the mindset of alims, scholars of that time who wrote these laws. This is volume 2 of 9 volumes, page number 289. The bride enters the slavery of the husband through marriage in such a way that she cannot be freed from that bond. So those people used to think this way, that women are slaves of husband, and they wrote these laws. So it's expected. These alims, or I won't call them alim, they are actually mullahs. They cross the limit what Quran told them not to cross in Surah Ma'idah 77, in Surah Nisa 171. And the Prophet also said this in his last sermon: don't cross the limit, don't overdo in religion. That's what they do. You know what? This is Ibn Majah, Sahih Ibn Majah, volume 5, hadith number 3952. I am reading one sentence. The Prophet said, what I fear most respecting my people, मेरा उम्मत के लिए मेरा सबसे ज्यादा डर किस बात के है? It's are they are misleading imams. वो इमाम जो हमें मिसलीड करता है. These alims who are against UCC, who were in favor of 3 talaq, they are misleading imams. We must reject them. Now it's very important to understand who is a real scholar and who is a mullah. Mullah is that person जो चीख पुकार करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, जिसमें एकेडमिक एटीट्यूड नहीं है. But there are good alims as well. Calm, शांत है, peaceful and real academic. The other day I saw in an Indian channel, I forgot his name, a big darvish jaisa ek maulana. He told that why you were shouting so much against UCC? उसको आने दो, हम डिस्कस कर लेंगे, हम बात कर लेंगे. See, such a beautiful advice. Over to you. Or I can go to the next example. फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो. और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना. इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है. और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा. जी सर. हो गया ना बात साफ? हो गया ना साफ? Isn't it clear to you, Abdullah Mansur? Yes, sir.
सर कुछ मसलक ऐसे हैं जो इसी को मानते हैं, जैसे कि अहले हदीस हैं और शायद शिया भी इसको मानते हैं कि एक बार में 3 तलाक नहीं दिया जा सकता। हाँ, शिया लॉ में, जाफरी लॉ में 3 तलाक नहीं है. So you see in this case about गवाह, the Quran said कि एक नहीं 2 गवाह रखो, right? And the Sharia law says that it's not obligatory. ये हो गया ना कुरान के खिलाफ, हो गया ना एंटी वुमेन साजिश, Sharia conspiracy. Yes sir, yes sir. Good, thank you. Now let me go to the next, the law Okay. of khula. You get ready. Let's go to another example of anti women Sharia conspiracy. It is about the right of women to divorce. In Sharia law, women cannot divorce. They can apply to the court. The court negotiates with the husband. It takes months and years and years. Meanwhile, she cannot marry because it's not finalized. He can marry. This law destroyed countless Muslim women's life. Khula, isko kehte hai khula. Okay, let's go to the Prophet now first, and then we will go to the Quran. Sahih Bukhari. All Sahih Bukhari I will show today is not translated by Dr. Mohsin Khan of Madina University. This is volume 7, hadith number 206. Barira was neglecting, rejected her husband Mugit. I'm reading the related part. Oh, let me read the whole thing. यहाँ से शुरू करना, edit करके. Volume 7, hadith number 206, Sahih Bukhari, translated by Dr. Mohsin Khan, Madina University. Narrated Ibn Abbas. Barira's husband was a slave called Mugit, as if I can see him now, going behind Barira and weeping, with his tears flowing down his beards. इतना रो रहा था husband Mugit कि उसका आंसू से उसका दाढ़ी wet हो गया, flowing down दाढ़ी से. The Prophet said to Abbas, "Oh Abbas, are you not astonished at the love of Mughith for Barira?" Prophet ने कहा कि मुगीत बरीरा को इतना प्यार करता है. Then the Prophet said to Barira, Prophet ने बरीरा को कहा, "Why don't you return to him? तुम मुगीत के पास वापस क्यों नहीं जाते?" Barira said, "O Allah's apostle, do you order me to do so? ये आपका हुक्म है?" He said, "No, I only intercede for him." No, ये हुक्म नहीं है, मैं सिफारिश कर रहा हूँ. She said, "I am not in need of him. I don't need बरीरा की मुझे जरूरत नहीं है." ये है कुरान. इसका पेज 271 में लिखा हुआ है कि Prophet agreed to Barira. Then there is another hadith in the same book, hadith number 199, Jamila. She came to the Prophet and she said, "My husband is a very good person, but I don't want to continue. मेरा दिल नहीं चाहता, वो आदमी अच्छा है." Prophet ने कहा तो he gave you his fruit garden as to you as then mahar, probably. Are you willing to give it back to him? She said yes. Then the Prophet enacted divorce. Done deal. Based on these documents, Egypt passed a law, I think in 2004, that if a woman applies to the court with agreeing to return her dowry, the bride money, then the divorce is done. Now let's go to hadith number 188, volume 7. Bibi Aisha radiallahu anha said that Allah gave us the right to leave the Prophet. Now you please read Surah Ahzab, verse 28. ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं. और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आकिबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकार हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है. Beautiful. So you see, do you agree with me that Prophet's wives had the right to leave him? Yes sir.
अच्छा सर, मैं एक बात यहाँ पे जोड़ दूं। क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे यूसीसी की जो बहस चल रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा ये है कि औरतें ज्यादा तलाक लेती हैं बनिस्बत कि मर्द, मुस्लिम मर्द ज्यादा तलाक देते हैं। तो उस पे हमारा आर्गुमेंट, पसमादा इंटेलेक्चुअल का आर्गुमेंट ये है कि औरतों को, क्योंकि भारत में जो शरिया है उसके तहत औरतों को गवाह की जरूरत पड़ जा रही है अपना खुला लेने के लिए, और तो इसलिए एक मीडिएटर के रूप में उनको दर्ज करना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने तलाक के लिए अर्जी दी है। जबकि मर्द को तो 3 तलाक का ऑप्शन रहा है, अभी जाके तलाक पे थोड़ा प्रतिबंध लगा है ना, वरना तो ऑप्शन था ही। तो वो तलाक दे के निकल लेते, तो उनका कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। तो ये Exactly. अभी, हाँ जी Exactly. सर। But now you see the proof that the Prophet gave women right to divorce, even if the Prophet का सिफारिश कुछ और था. Such a big right Prophet ने दिया, Quran ने दिया. So this Sharia law of Khula is anti-women Sharia conspiracy. You know what the Quran says about these people, the people who wrote these laws, anti-women laws? In Surah Baqarah, ayat 79 says, woe to them who write the book with their hands and then come and say, this is from Allah. This Khula law is not from Allah, it's from Allah. ये लोगों का घमंड बहुत है. दे चीख पुकार करते हैं, क्या बोलते हैं, you know, proud. They are very proud, Abdullah. And they also violate Surah Nisa, verse 36. Allah said, Allah doesn't like proud people. और अब्दुल्ला ये गीता में भी है, माँ कुरु धन जन जो बन गर्भंग हरती इन्हीं में सतकालंग सर्वंग. कुछ चीज का गर्भ मत करना, क्योंकि टाइम इस ऐसा करके सब कुछ छीन लेगा. कितना अच्छी बात है. गीता इज ए वेरी गुड book of advice. Now, let us go to another example. Polygamy. Common sense तो ये है कि even if, well, man has the right to marry 2, 3, 4, up to 4. We will go to the Quran, we will go to the Prophet. Now, it is against common sense, it is against justice that a man can marry other women at will, जब भी दिल चाहे. See, मैं तो ये कहता हूं, in conferences also I always say that even if I don't marry a second woman, my right to do so is a violence against my first wife. Plain and simple. We will go to the Quran, Surah Nisa. Now, let's go to the Prophet first. Volume 4. It is about polygamy. रसूल ने क्या किया था जब उनका दामाद हजरत आली ने he wanted to marry another lady. That is Hadith 157, volume 7, Sahih Bukhari. Narrated Al-Marwan bin Makram, I heard Allah's apostle who was on the pulpit, मस्जिद का मिंबर में थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, saying, उन्होंने कहा, Banu Hashim bin al-Mughira have requested me to allow them to marry their daughter to Ali ibn Talib. Banu Hashim Mughira propose किया था his daughter, उसका बेटी को हजरत Ali के साथ शादी करने को. But I do not give permission. Prophet didn't give permission. And I will not give permission unless Ali divorces my daughter Fatima. Because Fatima is my part of my body. And I hate what she hates to see. So, जब तक Ali Fatima को divorce ना करे, I will not allow him to marry another woman. ये teaching कहाँ गया भाई? This is not once. There is another hadith here in volume 4. Ali was going to marry Abu Zahl's wife, daughter. Prophet तब भी नहीं दी. And he said, I will not turn a haram into halal and a halal into haram. So, जब मर्जी, second marriage, third marriage, this is haram, which Prophet didn't allow. अब सोचे, अगर अल्लाह ने
मर्द को ये इख्तियार दिया होता कि जब भी मर्जी शादी कर लो, तब क्या प्रॉफिट हजरत अली को रोक सकते थे? कभी नहीं, कभी नहीं। नाउ प्लीज रीड चैप्टर निसा वर्स 3। अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। Thank you. Now we saw that the permission of polygamy is locked with the condition of the welfare of orphans. We cannot unlock it, Abdullah, can we? No, sir. ये ऐसा है कि your mother told you कि you are going out, if you see अगर दुकान खुला रहे तो रोटी लाना। अगर दुकान खुला रहे, if the dukan is not open, can you buy roti? No, you can't. You can't. This locked, this conditional permission has been unlocked by mullahs. This is another example, serious example of anti-women Sharia conspiracy. What Nisa 127 says, please go ahead and read. ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं। कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मुआमले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और तुम खा कितना ही चाहो, बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और अगर Yes. So we see that this condition is about orphans, yatims. अगर यतीम का सवाल ना हो तो बहु विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। Verse 129 says that you will never be able to do justice between multiple wives, right? ये भी पढ़ लेना कभी। Now the point is, there is a hadith in Sahih Bukhari. I will give you the number later. अब याद नहीं आ रहा। Oh yes, it is in volume 7. Volume 7, hadith 35, 59 and 62 इसमें मिलेगा कि बीबी आयशा is reporting the context of this verse कहाँ से आया। In Uhud battle, there were many killings, many Sahabis were murdered, and there were a number of orphan girls. And people were playing bad games with their properties and with them. So Bibi Aisha said that this verse was revealed to stop this injustice. So देखो, it was one time problem. It was one time solution where there is no question of foul play with orphans. The permission of polygamy doesn't apply. Do you understand? Do you agree with me, Abdullah? जी आपका जो ये आर्गुमेंट है कि यतीमों के लिए था और एक सर्टेन कंडीशन के लिए था। असल में सर होता क्या है कि लोग बोलते कुरान में जो बातें लिख दी वो क़यामत तक के लिए। तो अब इसमें हम पसमादा इंटेलेक्चुअल जो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ये बताओ कि जो आयत जंग की आयत है, तो उस आयत को क्या तुम आज शांति के वक्त में जब ये पीस है तब वो लागू कर सकते हो? ब्यूटीफुल यस। तो आज तुम क्या काफिरों को खोज के मारोगे? अगर तुमको लगता है कि ये आयत क़यामत तक की आयत, तो तुम कंडीशन देखोगे ना, किस कंडीशन में कौन सी बात कही गई है। जैसे आप सर कह रहे हो कि ये जो आप आयत थी इसमें यतीमों को के लिए ही विशेष बात थी, और ये भी कहा गया था कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो मत करना शादी। Yes.
And it is only Islam that asks the followers to marry one. Polygamy is not encouraged in Islam. It was one-time solution for a one-time problem. And मुल्ला लोगों ने इसको general बना दिया. अरे, this is another example, serious examples of example of anti-women Sharia conspiracy. जी सर. I think सर एक बात और मैं जोड़ दूं. जावेद अहमद गामदी साहब बहुत अच्छे से एक बात कहते कि अगर पॉलीगैमी इस्लाम का इंटरनल पार्ट होता, ये होता कि पॉलीगैमी करना ही है, तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक हवा नहीं पैदा होती, 3 हवा और पैदा होती. Very correct. And see, they have about 7 arguments in favor of polygamy, all bogus arguments. One of their major arguments is the women are more in number. Are bhai, just Google it. Just Google it. You will get in 1 second. In general, in the world, for every 100 men, there are 107 women. ये double भी नहीं है. So your equation is not matching. And there are countries where men are more than women. वहाँ क्या करेंगे आप? ये सब फालतू bogus arguments है. It's all wrong. It's wrong. Okay, I think we have done quite a lot in this event. Now let's conclude. If you want, we can address other issues in another events. And at the end, again, I congratulate you for your victory of Teen Talaq. And I wish your all-out success in favor of UCC, and take help from good alims, peaceful, knowledgeable alims, not mullahs. इस्लाम पकड़ के रखो, अल्लाह का इस्लाम पकड़ के रखो, मुल्ला का इस्लाम दरिया में डालो. थैंक यू सो मच. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए. मैं एक बार और सर हमारे साथ जुड़े रहें, और कई और इश्यू हैं जिस पे हमें बात करनी है. सर ने बोला कि अगले एपिसोड में हम बात कर लेंगे. तीन मेजर तरीके से हम 3 जो मुद्दे हैं औरत से जुड़े हुए, जिसकी वजह से उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है दबा दिया गया. औरतों को यहाँ इतना दबा दिया गया कि कुछ औरतें खुद ये कहती मिलती हैं कि वो 4 शादी उनके शौहर करे, कोई बात नहीं, मैं अलाउ करती हूँ. तो ये कैसे उनके दिमाग को हाईजैक किया गया है, सर उस पे बात कर रहे थे. और इनकी किताब बड़ी मशहूर किताब है और बहुत अच्छी किताब है, आपको गूगल पे मिल जाएगी. नहीं मिलेगी तो मुझसे बोलिएगा, मैं दे दूंगा. हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम. तो कैसे सर इतने दिनों से इसके ऊपर लड़ रहे हैं. इनके इंटरव्यू मौजूद है हमारे चैनल पर, आप जरूर उसको सुने, ताकि हम अगले एपिसोड में जब मिले तो आपके सवालों के साथ मिले. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए. Thank you. Please remind me to address halala. This is another Sharia conspiracy, huge Sharia conspiracy against Muslim women. And this halala has destroyed and insult Muslim women so much. So in next issue, I will address halala and I will show you why it is anti-Islamic, anti-Quranic, and definitely against Muslim women. Thank you so much. Thank you, sir. Jai Pasmanda. Jai Hind.